girl Shruti. What's up and welcome back to my channel. Welcome back to a new video. And आज का video होने वाला है haul video which I'm very excited about because I got such cute Pinteresty tops. I am obsessed with them and I can't wait to share it with you guys. So without further ado, let's get started. बहुत सारे अलग अलग ब्रांड से शॉपिंग की है बट फर्स्ट लेट्स सी व्हाट ऑल आई गॉट फ्रॉम द सोल स्टोर बिकॉज ये बार का कलेक्शन बॉम आया है. I mean the tops that I've picked up are so cute. I'm actually going to pick up some more tops honestly. So the first one I picked up is this one. ये मैं already पहन के एक बार धोकर हो चुका है. I am obsessed with this top. This is honestly one of the best top that I own. It looks so girly. It's so cute. I mean just look at it. Firstly ये जो strap detailing है यहाँ पर आप adjust कर सकते हो. So if you find it too deep then do not worry, you can adjust that as well, which I really like. And look at the neck detailing. It has a beautiful scoop neck just like this and इस पर ये white detailing, frill detailing भी हो रखा है यहाँ पर. I mean so freaking cute. Love the print on this. It has this gingham pattern going all over. ये brown का combination. I think ये color combination मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है और ये इतना अच्छा लग रहा है मेरे पे. It has this corset detailing. I don't know कैमरा ये पिकअप कर पा रहा है कि नहीं बट इस पर जो भी स्टिचिंग हो रखी है it's very similar to like a corset. Obviously boning नहीं हो रखा है बट जो स्टिचिंग है वो सारी चीज़ें it's very similar which I really like. Love the fitting on this. The flow is so beautiful and this is how the back looks like. Again same scoop neck and पीछे यहाँ पर ये डोरी भी दी हुई है. So if you want to like cinch it near your waistline you can do that and absolutely love the length. Exactly ये crop top बिल्कुल भी नहीं है. It starts where your low waist jeans would start, so below your belly button only. One of my favorite tops. Absolutely love it. मैंने already पहना है as I said and I think that day when I wore this I went to H&M to get some shopping done. वहाँ पर एक लड़की ने same exact top पहना हुआ था. She saw me, I saw her and I'm like and she actually commented really good top and I was like same. I love girls supporting each other and it was looking bomb on her as well and it's looking bomb on me too, especially if you're heavy busted. It's gonna make it look so good. I am obsessed. Absolutely love it. A 10 on 10. The next top I picked up from the latest collection. I honestly was a little bit skeptical कि मुझे पसंद आएगा कि नहीं. Firstly I love the color. This डार्क इंडिगो नेवी कलर ऐसा मेरे पास है नहीं टॉप कोई भी. इट्स वेरी प्लेन सिंपल one single color and this is how it looks like. As I said I was a little skeptical कि मुझे पसंद आएगा नहीं आएगा but I was like I need to try it out because it's quite unique. Firstly it's sleeveless. Next it has this smock neck and it has the zip detailing. तो आप एक्चुअली इसे पहन के आपके हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकते हो. यू कैन मेक इट लुक एक्सट्रीमली सेक्सी और यू कैन जिप इट अप. आई लाइक टू प्ले इन बिटवीन एंड सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे इसका लगा है इज़ दिस सिंच डिटेलिंग राइट ओवर हियर एंड आई लव दैट. For the first time it actually ends where my boobs end and not right in between over here. So stitching wise they've done a good job and it actually makes it look good. It accentuates it and does not make it look like it's cut in half. You know what I mean? If you know you know. And ये भी एक proper long top है. Not too long, not too short. Exactly where you want your proper long tops to be. This is exactly that. I love the way it cinches. It's not straight like this. It has a nice little curve. You can clearly see it in the try on part. I love it. इसके पीछे कोई भी ऐसा like tie back detailing यहाँ पर नहीं दिया है but I honestly have no issues. It's cinching really well. एंड ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है इसमें. इट हैज़ दिस कॉलर एज वेल जो आप ऐसे पहन सकते हो. यू कैन सी हाउ इट्स लुकिंग इन द वीडियो. काफ़ी प्यारा है. एज अ सेड आई वाज लिटिल स्केप्टिकल बट जैसे मैंने ये पहना एंड द वे इट फ्लोज, द वे इट्स द स्टिचिंग एंड एवरीथिंग रियली मैटर्स एंड यू कैन सी इट हाउ सच अ सिंपल टॉप इज़ मेकिंग इट लुक सो मच बेटर एंड बूजी. ये अभी इस्त्री नहीं है बट या यू नो व्हाट आई मीन राइट. So yeah, really good top again. A 10 on 10. ये दोनों टॉप मुझे इतने अच्छे लगे हैं ना. I love it. Next, let's talk about the top that I'm wearing right now. Recently, actually पहले भी उन्होंने Powerpuff collection launch किया है, but this is their latest launch. And I love it. इसमें सब available है. Blossom का मैंने पहना हुआ है. There's Buttercup.
all the colors are available and this is how it's looking like. I really like it. This is definitely a little bit more cropped than I would like. And also एक चीज़ मैंने notice की है, this snugs really tight to your body to the point कि आप बैठोगे तो if you have a little bit of tummy bulge, ये वो दिखाएगा, ये वो accentuate करने वाला है. When it comes to other two tops that I just showed you, it's quite forgiving than this one. I just wanted to point it out, okay? Again, this is how the neckline looks like. I really like it and I love that इसमें भी ये zip detailing दिया हुआ है. If it's like to यहाँ तक, I don't think it's the best shape for girls like me who have heavy chest. So this little detailing makes a huge difference, I feel. And this is how the sleeve looks like. It's not like 3/4, like half से थोड़ा ऊपर है. And I love the popping colors of this combination of pink and black. I love. And यहाँ पर ऐसे blossom लिखा हुआ है. It's a crop top for sure, not too cropped, which I like. So if you are into crop tops but not too crop and you don't want a long top, so I feel this is right in between that. I can't say it's like a crop top as well because it's quite long as well. So I am so about it. It's good, but I do not like the fact कि it's accentuating a little bit of that fat. You know what I mean? So yeah, I don't know. I'm a little confused. Let me know whether I should keep it or I should return it. And yeah, I would give it a 8 on 10. Next, I picked up this pant. Now this is more like joggers but with denim material. Denim material है, थोड़ा stretchy वाला ही denim material है. And yeah, it's like joggers basically. It's like a pull-up jeans, you can say. और मुझे एक ऐसा flexible, quick pant चाहिए था whenever I want to run errands and I want that one jeans available that I can quickly pair it up with literally any top. I wanted such pant and I thought this is like perfect for it. I mean, look at it. It's literally perfect and I love it. But साइजिंग का थोड़ा इशू हो रहा है मुझे. आई पिक्ड इट अप इन साइज 30 हो जाता, बट फॉर सम रीज़न ये मुझे साइड से थोड़ा स्टिफ हो रहा है. मुझे पहनने में भी इशू हो रहा है एंड पहनने के बाद भी साइड से बहुत ज़्यादा टाइट फील हो रहा है. 32 वुड हेल्प, सो आई माइट एक्सचेंज इट फॉर अ साइज अप बिकॉज राइट नाउ यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइड में टाइट हो रहा है एंड इट मेक्स नो सेंस. व्हेन आई सिट इट विल बिकम वर्स and I don't want it to fada in the future. So yeah, this is how it looks like. I love that it does have pockets. Does it have one or does it have two? Yeah, it has 2 pockets. Nothing fancy honestly. It's just a denim pull-on pant. And as I said, इतना भी stretchable material नहीं है. अगर stretchable होता तो वहाँ मुझे actually fit होना चाहिए था. But ये proper denim material ही है. It's just made into this jogger thing ताकि आप easily पहन के क्विकली बाहर जा पाओ. एंड आई लव दैट इट हैज़ द स्ट्राइप डिटेलिंग. ये भी मुझे काफ़ी प्यारा लगा. इट हैज़ अ वेरी Adidas फील टू इट. Look wise, I love the flow of it. It's not like cinching over here, which I absolutely hate. I love that it's like straight. I would say it's a loose straight fit, which is one of my favorite fits, by the way. And yeah, that's all I have to say about it. I'm just going to exchange it for a size up. I really like it. It's just the sizing, I missed it. So I'll definitely grab it in size up. I will give it a 9 on 10. That's all I got from Soul Store. Next, I picked up this tube top from this brand called Ramyat Designs. मैंने कभी भी इनका कोई भी चीज़ ऑर्डर नहीं किया है, so I was a little confused whether चीज़ अच्छा आएगा नहीं आएगा. But I'm pleasantly surprised. It's actually a cute red top. कलर भी काफ़ी प्यारा लग रहा है and it has come exactly what is been shown on the website, which I'm very thankful for. Let's talk about the tube part. यहाँ पर आप देख सकते हो cinch detailing दिया हुआ है and in the front they've given some silicone lining as well, which is I have picked up a size medium and it's fitting me properly, and because of the silicone thing it actually sticks to your skin, तो वो secure भी हो जाता है. But I actually like to wear my enamel bra and इसका strap निकाल के I like to use the beaded strap thing, जो fancy straps होते हैं. I can wear it with that. I do not mind wearing it as a tube because of the silicone lining thing. And आप देख सकते हो front में it has a cinch detailing जो आप actually adjust कर सकते हो. तो आपको थोड़ा और relax चाहिए तो आप ये relax कर सकते हो. And at the bottom it has cute little frills right over here. And when I was buying this, I was actually thinking to pair it up while I'm vacationing. I can wear it
over my swimwear. काफ़ी प्यारा लगेगा as a tube top, or you can pair it up with some white jeans, white pants. I think that will look super cool as well. I really like it. I'm definitely going to keep it. I will give it a 8 on 10. Next, I picked up a bunch of things from this brand called Ketelco. Ketek, I mean, I can't really pronounce it properly, but again, something that I've never purchased from before, so I was a little confused, and so reactions hai honestly. So firstly, I picked up this dress. Again, it was on my wish list for quite some while, और ये सब मैंने ना vacation सोच के लिया हुआ है. Just wanted to put it out there. This again, I've picked it up in size medium, if I'm not wrong. ये काफ़ी ज़्यादा टाइट है, so definitely size up in this. If you are planning to buy it, definitely size up. It's very beautiful. I love the print on this. This is screaming vacation, which I like. And इसका जो neckline आप देख सकते हो, it's off shoulder, which again very cute. And इसका जो print भी आया है exactly जो website पे है वैसे ही print आया है, which I like. And also the sleeve on this, it has a nice bell sleeve, very long and like open at the bottom. Again very cute. And the fitting, as I said, काफ़ी ज़्यादा tight आया है, काफ़ी ज़्यादा tight आया है, so definitely size up. And it just is like a bodycon fitted dress. And the material इसका जो है काफ़ी stretchable है, soft कपड़ा है. Material इसका I think polyester ही होगा. And इसमें बिल्कुल भी lining नहीं दिया हुआ है. Just keep that in mind. There's literally no lining whatsoever. It's not see-through though, but lining बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, and it's just super tight. Yeah. That's all I have to say about it. I would give this 8 on 10 again. The next top I picked up. Okay, I'll just pop a picture over here. I mean, इतना अच्छा लग रहा है model पे, and photo इतना अच्छा डाला हुआ है, and this is what they have sent me. I mean, what the hell is this? What the hell is this? Look at the threads. It's literally everywhere. Look at the quality. Again, it's from the same brand, this Ketelco. I'd recommend not to buy from them because इतना ख़राब quality कैसे कोई दे सकता है? Like, I don't even know whether I want to wear and show it to you guys. Just look at this. एक कपड़ा बस ऐसे लटका के यहाँ पर दो ऐसे threads मार के दे दिया है. The quality of the कपड़ा is so pathetic. And the threading and जो भी stitching का काम हो रखा है वो भी इतना pathetic करके दिया है. There's loose thread everywhere. Literally everywhere. एंड ये इतना पतला कपड़ा है और बस कुछ है ही नहीं इसमें. ये क्या है, क्या दिया हुआ है? यू गेट माई फ्रस्ट्रेशन राइट. सो दिस इज सपोज टू बी एक्चुअली अ सेक्सी टॉप विच इज़ लाइक ओपन इन द बैक एंड यू जस्ट हैव टू टाई दिस इन द बैक. एंड ये फ्रंट है. आई अगेन एज आई सेड I was thinking of vacation look. This अंदर से you can wear swimwear and something like this on top. Again, it gives beach location, right? The print and everything is like okay-ish, but the stitching on this is terrible. Just don't buy this. I would actually give it a minus if there was a minus scale on it. Next top, again I picked it up from the same brand, Ketelco. ये आया हुआ है literally 2 triangles connected to this, and ये जब भी आया ना, and it has all of this big connectors, तो मैं इसको देखती रह गई कि ये पहनना कैसे है. आई वाज सो कन्फ्यूज. आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड. मैंने फ़ोटोज़ देखी, आई ट्राई टू वेयर इट, नॉट हैपनिंग. अगेन मैंने थोड़ा ब्रेन रैक किया, ये पहनना कैसे है. सो यू गेट माई फ्रस्ट्रेशन राइट. सो बैड. आई मीन दिस इज़ द कपड़ा, वेरी थिन, कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ एक बेसिक लाइक नो लाइनिंग, नो नथिंग व्हाटसोएवर. इट इज़ अ बिट स्ट्रेचेबल, थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है, वो भी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है नहीं. प्रिंट जो बताया है वैसे का वैसे ही आया है, दैट इज़ अ गुड थिंग. बट क्या है ये, कुछ भी दिया हुआ है. ऑनेस्टली इट्स लाइक सो बैड. आई वुड आस्क यू टू नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम दिस ब्रांड. ऑनेस्टली इट्स सच अ कैटफिश ब्रांड. एक चीज़ उनके ढंग की नहीं आई हुई है एंड मेरे सारे पैसे चले गए. द प्रिंट इज़ ओके-इश, बट वट इज़ दिस? लाइक आई जेन्युइनली डू नॉट नो how to wear this, and आप ट्राई ऑन पार्ट में देख सकते हो if I wear this कि कैसा लग रहा है. सी थ्रू नहीं है, you can see it's not see through, but the quality is so third class. Again the threading, the जो भी stitching का काम भी किया हुआ है ना, सब threads, loose threads है, सब इधर loose threads है.
and it's honestly, the quality is pathetic. Again, a 1, honestly, so bad. Next, this is the last thing I picked up from this brand. Again, same brand, Ketelco. आई थिंक मैंने एक ऑर्डर करना चाहिए था एंड उसके बाद मैंने मल्टीपल चीज़ें ऑर्डर करनी चाहिए थी, बट आई एंडेड अप पिकिंग अप अ लॉट ऑफ स्टफ विच अगेन द क्वालिटी इज सो पथेटिक. आई मीन द कपड़ा इज़ so bad. It's, I think, polyester, very patla, very so quality. It's supposed to be like a vest, but आप देख सकते हो there's no structure, no nothing. It's looking like a banyan. It doesn't look as bad, and इसमें ये bow detailing दिया हुआ है. I think I can make use of it and wear it, but is it the best quality? No. Again, threading सब इधर loose threads है, and as I said, it's supposed to look like a vest. It has button detailings all at the front, and पीछे कुछ भी नहीं है. It's just bow detailing all over. It's very soft and comfortable. It's polyester, but ऐसे वो itchy वाला material नहीं है. But the quality of it is so terrible. I would give it a 5 on 10. And the last thing I picked up is this seamless strapless bra from this brand called Sanidhi. If you know, if you have seen my previous videos, you guys know whenever I want to wear anything strapless, I always pair it up with my bunny ups and my Enamel strapless bra. But वो Enamel strapless bra ना, यहाँ पर उसका जो boning है, it's quite long and वो काफ़ी dig होता है. It's not the most comfortable to wear it the whole day, which is why I wanted to switch that strapless bra up with something that's A, seamless, B, it's way more comfortable. That's the reason I picked it up. And same exact thing ना मैंने सवाना पे भी देखा था और तभी भी मुझे लेने का बहुत ज़्यादा मन किया था. So when I saw this on Amazon from this brand called Sanidhi, I definitely wanted to pick it up. So I picked it up in size large, and this is how it looks like. अंदर से अगर आप देखोगे, it has this silicone strip lining जो आपकी स्किन को ऐसा स्टिक करेगा, एंड इट्स सपोज टू लाइक गिव यू नाइस ग्रिप, एंड इट डज़ हैव वेरी सॉफ्ट रिमूवेबल पैडिंग अगर आपको नहीं चाहिए तो. नीचे ऐसा कोई रिस्ट्रेनिंग बैंड या फिर ऐसा कुछ है नहीं, इट्स वेरी लूज दैट वे. एंड दिस इज़ हाउ द बैक स्ट्रैप लुक्स लाइक. इट्स सपोज टू बी लाइक दैट जिगजैग थिंग, एंड ये भी एडजस्टेबल है. तो अगर आप देखोगे, यू कैन एक्चुअली रिमूव दिस, एंड यहाँ पर 3 ये है जो आपको सिक्योर करना है. सो अगर आपको लूज चाहिए, टाइट चाहिए और टाइट चाहिए, आप वो चेंजेस कर सकते हो ऑन बोथ द साइड्स. यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है. सो यू सपोज टू वेयर इट लाइक अ जिगजैग समथिंग लाइक दिस. एंड इस स्ट्रैप के अंदर भी अगर आप देखोगे ना, इट हैज़ द सिलिकॉन लाइनिंग थिंग. ओके, दैट्स अबाउट दिस ब्रा. नाउ टॉकिंग अबाउट इज इट गुड, द फर्स्ट थिंग आई नोटिस्ड एज सून एज आई वोर इट इज ये जो पीछे का ये है ना, ये इतना ज़्यादा लूज़ हो रहा था. लूज़ एज इन आई फेल्ट लाइक वो स्ट्रेच हो रहा है. इट्स नॉट रियली, इट डजेंट हैव दैट स्ट्रक्चर टू होल्ड ऑन टू इट्स प्लेस. इट्स वेरी फ्लिम्जी, एंड ऐसा लगा था कि वो स्लैक्स वाला मटेरियल नहीं होता जो ऐसे स्ट्रेच हो जाता है ज़्यादा खींचोगे तो. ये वैसा था. आप देख सकते हो थोड़ा रिंकली हो गया रहेगा, लाइक ऐसे स्ट्रेच होके वो जो प्लास्टिक होता है जो ऐसा स्ट्रेच कर दिया तो ऐसा ये हो जाता है ना, वैसा हो रहा है ये फॉर सम रीज़न. I mean, the vision is there, the material is lacking, and what is this? Like, why is it happening? If it had the structure to hold on to stuff, because the only thing I want is the bunny ups to stay in place, and I want something that will keep it in place. So उसके लिए मुझे इतना struggle करना पड़ रहा है. Honestly, एक भी चीज़ अच्छी नहीं मिल रही है मुझे. This also, you can buy it if you don't mind the quality. एंड आई थिंक लार्ज मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा मंगा लिया. ऑनेस्टली, साइज डाउन इन दिस, अगर मैं मीडियम या स्मॉल भी मंगाती, दिस वुड हैव फिट. बट ऑनेस्टली मुझे लार्ज मंगाना था बिकॉज ऑफ द कप साइज़. आई कांट डू स्मॉल कप साइज़, राइट? सो इसका कप साइज़ भी इतना बड़ा है नहीं. स्टिल लार्ज बहुत ज़्यादा लूज़ लग रहा था मुझे. एंड या, इट्स वेरी फ्लिम्जी. आई कैन मेक इट वर्क. इट्स नॉट लाइक आई कांट मेक इट वर्क, but I wish the quality was a little bit more better. That's my verdict on it. So yeah, 6 on 10. And that's it for today's video, you guys. If you enjoyed this video, don't forget to hit that like button. Let me know in the comments down below what video do you want me to film next. सारे products के link मैंने description में दे दिए हैं, and do not forget to add it in your cart and get the shopping done, because
Prime sale is on and you can get up to 70% off on all top brands. Beauty and fashion, perfect time है to get the shopping done. इससे अच्छा sale आपको नहीं मिलने वाला है. With that said, don't forget to like, share, subscribe, hit the bell notification notified whenever I upload a new video. And I'll see you guys in my next video. Bye.